So, good afternoon, everyone. In the last lecture, we are studied about the metal ligand bonding. Okay, metal ligand bonding from the coordination compound and different geometry and different property of the coordination compounds that all depend on the their structure and then number of coordination, number of coordinated ligand. Okay, so number of ligand it decide the number of valencies. Okay, and then second thing, the hybridization decide the geometry, but the hybridization is also depend upon the number of coordinated bonding formed by the metal ion. Okay, so geometry and the property of the complexes, they are very closely related to the metal ligand coordination bonds. Okay, so this thing we already learned into the last lecture, and in today's lecture we go to some partly revise the oxidation number because this already been learned into the last lecture. Oxidation number, it's simply known as the number of positive charge on the central metal ion. Okay, so that thing we already learned into the last lecture, and this is the formula, means this is one of the trick by using that you can find out the oxidation number for the metal ion in the complexes. Okay, so this is very simple. There are some example we already learned in the last lecture, and from this example definitely you will be understand how to calculate the oxidation number also. I hope my sound is clear. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So this example is a chromium complex we are studied in the last lecture. There is a coordination compound, this chromium complex, and for their chromium complex we find out the oxidation number. Okay, there is another example is there. This is the cobalt at the center metal ion, and we are find out the oxidation number for that. So you can see here. Okay, so this is the cobalt, and there is the EN. You know that EN, what is the meaning of EN? Is the ethylene diamine. Ethylene diamine is there. Okay, so diamine means there are two nitrogen group at the end of the molecule, that is EN, and you can see here there is a three molecule is there, that is the three. Okay, so three EN molecule, and each EN molecule having a two donating nitrogen side. That's why it is a bidentate ligand. Okay, and we are going to find out the oxidation number of this complex. So we can see here this nitrogen means all nitrogen in an EN, they all are the neutral ligand. So they are the neutral bond form, neutral donating atom. Okay, because this is the neutral molecule. EN is a neutral molecule, and it has a lone pair of electron on this nitrogen that gives to the cobalt central metal ion and form this bond. Okay, this bond is formed by the donating this lone pair of electron to the central metal. Okay, so in this complex there are total 6 nitrogen is there in the 3 molecule, but they all are the neutral molecule. So that's why the charge on this molecule is 0, and we know the trick and the formula by using that you can find out the oxidation number in this complex. So this is very simple. Firstly, the charge on the cobalt, that is you have to be find out, that is to be the X, plus then number of ligand here there is a 3. Okay, and on each ligand there is charge is 0, so 3 into 0. Okay, and that is equal to be, there is a charge on the complex, that is to be the 3 plus. Okay, this is the 3 plus charge. Okay, so let's solve this equation. That is the X is the X plus 3 into 0, that is equal to be 3 plus. Okay, so 3 into 0, that is to be the 0, and then this X is equal to, X is the oxidation number of cobalt. We just assume here, you can take the any alphabet for that. So that X is equal to be, that is 3 into 0, that is to be the 0. The total term is 0. This all term is 0. That means this X is equal to this 3 positive. So X is equal to 3 positive. That means the oxidation state
of the cobalt in the complex is +3. Okay, so in this way you can find out the oxidation number for the metal ion in the complex. Okay, so ligand have a 2 or more donating atom bidentate ligand. Okay, these are called polydentate ligand or chelating ligand. This is all thing we already learned. Therefore, En is a bidentate. Okay, so now we come to, after that oxidation number, coordination number, we come to the mystery. Okay, so metal, same ligand, different number of ion. Okay, some metal, same ligand, same ligand, different number of ion when it dissolves. Okay, means there is the same metal ion in the complex, same type of ligand in the complex, but their coordination number is different. Coordination is number different. So due to that, the color it will be changed. The color it will be changed. That all depend on the oxidation number and all depend on the coordination number of this complexes. Okay, so we can see here, this is the cobalt complex. This is the cobalt COCl3 and 6 amine. COCl3 and 6 amine. Okay, so here the color of this complex is orange. Okay, color of the complex is orange color. So ion per formula unit is 4, and free chlorine ion there is a 3. So this is the example for the Warner theory. For to understanding this table, firstly we have to know about the Warner theory. So firstly we learn about the Warner theory, and then from that we going to solve this table, because this is the table for the conductometric study of the Warner theory. Sir, please hold up. So Warner theory is there. So metal, and then there is the ligand, and there is the coordination sphere. After that, this again ligand. Okay. तो इस तरह से हम जो है कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, और वार्नर जो है फर्स्टली सजेस्टेड इन 18 valencies, ठीक है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी valencies, इट एक्सप्लेन्ड बाय वार्नर. ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हेलो, हाँ ठीक है. तो वार्नर थ्योरी में हमने देखा यहाँ पे कि क्या था, इन 1893 it was he was firstly proposed this theory regarding to the valency of the complexes. Okay, so in complex there are two type of valency, primary valency and secondary valency. Okay, so he was the first scientist. He talked about the valency of the complexes. Okay, primary and secondary valency. Okay, so primary valency, what is the primary valency, what is the secondary valency, how it related to the ligand, how it related to the charge on the complexes, that all things we are going to be learned. But firstly we have to know about this Warner theory, because this Warner is given the theory, gave theory about the valency of the complex, and the name of the Warner gives to this theory. That's why this is known as the Warner theory. Okay, that is very simple thing is there. So there is a complex metal, you know that metal is very much important in the complex, and second thing is ligand. Okay, so there are coordination sphere is here, means the total complex, you can see this all structure, this is incorporated in this square bracket, है ना. इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, बट ये जो हमें यहाँ पे ये ब्रैकेट दिख रहा है, जो स्फीयर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कंसीडर करके कुछ वैलेंसी जो है, कुछ लिगैंड जो है जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहते हैं, और कुछ लिगैंड जो होते हैं ये आउटसाइड द स्फीयर रहते हैं. ठीक है ना. तो इन दो टाइप ऑफ लिगैंड को, ये जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको कैटेगराइज किया गया है इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में. ठीक है, तो देखो अब ये जो एग्जांपल है जिसे हम बेसिकली लिखते हैं
सॉल्ट को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से हम लिखते हैं जिसमें मेटल होता है और लिगैंड होता है इनसाइड द स्क्वायर। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। और ये जो रेड कलर में हम देख रहे हैं, दिस इज टू बी द लिगैंड व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे है जिसमें हम देख रहे हैं देयर इज अ ब्रैकेट, ओके, दैट इज द स्फीयर, and inside this sphere this is the cobalt, and amine this is the NH3 by 6, okay, and one bromine is outside the coordinating sphere. Okay, so this 6 NH3 this is directly bonded. ये जो है ना, ये ग्रीन कलर में जो हम अमाइन को देख रहे हैं, तो ये अमाइन जो डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म करता है, स्ट्रांगली बॉन्ड फॉर्म करता है with the central metal. Okay, it's not necessary there is cobalt is always, so that will be changed as per the different type of complexes. Okay, so this amine is one of the ligand, okay, inside this bracket. Okay, this is the coordination sphere. इसको हम coordination sphere कहते हैं, और इसके अंदर जो भी लिगैंड हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्ट्रांगली बॉन्ड फॉर्म करते हैं कोबाल्ट के साथ, क्योंकि दे आर क्लोजर टू द सेंट्रल मेटल आयन. Okay, and that's why they are inside the coordination sphere, and it is called as to be the secondary valency. Secondary valency, and secondary valency it's related to the coordination number. ठीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने नंबर ऑफ लिगैंड हमें दिखते हैं ये सभी को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, और ये जितने नंबर ऑफ लिगैंड होते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया है कोऑर्डिनेशन नंबर को. ठीक है, और ये जो है ये इनसाइड द लिगैंड जो होता है, या इनसाइड द स्फीयर जो लिगैंड होता है, जो अमाइन जो है, इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है ना, दिस इज नॉट आयोनाइज. ओके, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट एक एंटिटी बना देती है जब ये डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे तो एक ही एंटिटी रहेगी जो कि कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये ब्रोमीन छोड़ के. ठीक है, और ब्रोमीन जो है जो कि आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो वीकली बॉन्डेड होता है कोबाल्ट के साथ में, है ना, तो वीकली बॉन्डेड होने की वजह से इट इज प्रेजेंट एट सम मोर डिस्टेंस देन टू बी सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब थोड़ा दूर होता है एज कंपेयर टू द कोबाल्ट. और जब हम कॉम्प्लेक्स को मतलब उसको ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर, तब ये जो ब्रोमीन होता है या ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, तो ये हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, ऐसे इस तरह से, जो कि डॉटेड लाइन से मेटल आयन के साथ बॉन्ड है. ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है. ठीक है, तो इस तरह से वहां पे बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, इसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं. तो ये जो कंसेप्ट था वार्नर ने फर्स्ट अपॉन पुट अप किया था. ठीक है, और इस थ्योरी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी जो है वो स्टार्ट हुई थी. ठीक है, so this is the first theory proposed by the Warner regarding to the study of the coordination compound. Okay, and then second thing about the primary valency, कि क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, मतलब पूरा कोबाल्ट NH3 बाय बाहर जो ब्रोमीन है, इसके साथ में जब हम इसको सोल्यूबल कर देते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ, इसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो इन दैट टाइम it will be gives two different ion. Okay, दो आयन यहाँ पे बनते हैं. एक तो ये ब्रोमीन जो है ये वीकली बॉन्डेड होता है, थोड़ा सा दूर होता है कोबाल्ट से, सेंट्रल मेटल आयन से, तो इसका ब्रेकडाउन होके ये आयन इजीली बना देता है, दैट इज टू बी द ब्रोमीन आयन. ठीक है ना, ये ब्रोमाइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ये एक चीज होती है. और दूसरी चीज जो है ये टोटल जो एंटिटी है यहाँ पे CONH3/6, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आयोनाइज होके एक आयन फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है. इसको हम डिफरेंशिएट भी करेंगे आगे के कुछ स्लाइड में, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी. So once again I repeat it, this primary valency which is present outside the coordination sphere, and secondary valency which is present ligand present inside the coordination sphere. Okay, that is very simple concept, but now it is simple. In that time it will be very new concept for everyone. Okay, then
This theory is very applicable, very useful theory regarding to understanding the structure and valency of the complexes. Because what happened, we know that before the Warner, one complex is given by the target, that is to be the CO, Cl3 and 6NH3 molecule. Okay, so this is the complex CO, Cl3, CO, Cl3 and 6NH3. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स टारगेट ने दिया था, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स. What is the geometry, what is the valency, what type of bonding, what is the electronic spectra, nature of magnetic behavior. So nothing it told about this complex structure, but it just introduced this complex by the target. What happened after that, when Warner come and he was put this theory about the valency, and then this theory is confirmed or it is evaluated from the conductometric study of this complex, target complex. Okay, so in this conductometric study, Warner observed same complex, then the same metal ion, same type of ligand, but the number of ions is different when it's soluble into the particular solvent. ठीक है ना? मतलब वार्नर ने क्या किया, इसी टारगेट को यूज किया, इसका कंडक्टोमेट्रिक स्टडी किया और उसमें उसको फाउंड हुआ कि मेटल आयन सेम है, लिगैंड भी सेम है, बट इसका जो नंबर ऑफ आयन जो हमें मिल रहे हैं, ये नंबर ऑफ आयन डिफरेंट है. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ आयन डिफरेंट क्यों थे, तो इसको उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को वहां से उसने अंडरस्टैंड किया और उसको एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हमें CuCl3 into 6NH3, तो इस कॉम्प्लेक्स में इसका एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हमें समझ में आ रहा है, बट ये इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये मॉडर्न फॉर्मुलेशन जो है ये तो पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके है. तो ये अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टोमेट्रिक स्टडी इट इज कंफर्म, ओके, और इट इज गिव सम एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस स्ट्रक्चर. ओके, तो इस तरह से है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, बट नाउ टाइम इज गोइंग टू द एंड एंड I also going to be end this lecture, but if you have any query, question, problem, so you can ask me. Dear student, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. Any question? ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है.